Bismillahirrahmanirrahim. And now we are on advantages and disadvantages essay of IELTS writing exam task number 2. What the question says? Question says that is it good for children to start using computers from an early age and spend long hours on them? क्या ये बच्चों के लिए अच्छा है कि वो कंप्यूटर यूज करें for long hours और अर्ली एज से? डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. What we need to do is जैसे हम essay को देखेंगे, first we have to identify what is the topic and then we have to identify what is the focus of the examiner. Number 3, what is side number 1 of this essay for explanation and what is side number 2 for the explanation as well. If you see this specific essay, see here, is it good for children to start using computer? So use of computer is the topic of this essay. And if we talk about the topic extension rather, use of computers from an early age and spend long hours on them. So this will not exactly make the topic. Use of computers from an early age and spending long hours on them, it is the topic. And what is the focus? Focus is on the children. And then side number 1 that we will explain in this essay is the advantages. And side number 2 that we will explain are the disadvantages. So, is it good for children to start using computer from an early age and spend long hours on them? Discuss advantages and disadvantages. Sir ने आपको बताया 5 steps में ऐसे लिखना. Step number 1 is brainstorming. सबसे पहले advantage disadvantage के points को निकाल लीजिए. फिर उसके बाद number 2 introduction लिखें. फिर number 3 आप explanation का para 1 लिखें. फिर नंबर 4 आप एक्सप्लेनेशन का पैरा 2 लिखें. फिर नंबर 5 आप कंक्लूजन लिखें. और दूसरा इन 5 स्टेप्स में आप जब इससे मुकम्मल कर लेंगे, द 6th वन इज नाउ द रिव्यू. तो वो जो एक्सप्लेनेशन का पैरा था ना, पैरा नंबर ऐसे का पैरा 2 and 3 में एक्सप्लेनेशन कह रहा था 1 and 2, उनको मैं एक स्टेप कंसिडर करता हूँ. सो स्टेप 1 इज ब्रेन मेकिंग. दोनों के पॉइंट्स निकाल लें एडवांटेज डिसएडवांटेज के. Step number 2 is introduction writing. Step number 3 is explanation writing. अब इस explanation writing के 2 paragraphs होंगे. Step number 4 is conclusion and step number 5 is the review. Okay? तो इस तरह से हम अपना essay complete करेंगे. The first thing that we are going to work on, we are going to identify the advantages of this one. हम क्यों करेंगे ये काम? And this work of writing advantages, if this type of essay is an exam, why we write the advantages? Because where we will write the advantages, we will write the advantages on the rough sheet that will be provided by the examiner to us in exam. And why we are writing these? Because हमें फिर लिखते हुए सोचना नहीं पड़ेगा. I will the better position to be more focused during writing. हम ज्यादा focused होंगे during writing. So पहला advantage हम assume करते हैं. The first advantage is the IT literacy. IT literacy. बच्चों को जो information technology है, IT लिटरेसी बहुत बचपन से ही मिल जाती है. जब बचपन से लिटरेसी मिलेगी तो उसका मैंने आपको कहा था हमेशा आइडिया के साथ इम्पैक्ट जरूर लिखिए ताकि बात मुकम्मल हो जाए. सो आईटी लिटरेसी एंड दिस आईटी लिटरेसी विल लीड टू बेटर स्कूल परफॉर्मेंस and we will exemplify the online classes and stuff like that. हम कहते हैं the second advantage is that students को ease मिलता है. Ease of handling data. Ease of handling data. उसका impact क्या होगा? Big heavy bags से उनको rid मिल जाएगी. They will get rid of the big heavy bags. Okay? वो अपने कंप्यूटर पे अपनी कॉपीज को सॉफ्ट कॉपीज की सॉफ्ट कॉपीज भी रख सकते हैं, बुक्स की भी सॉफ्ट कॉपीज रख सकते हैं. ओके. द नेक्स्ट वन वी थिंक दैट हम कहते हैं कि कंप्यूटर को अगर वो लॉन्ग आवर्स के लिए यूज करें तो तीसरा एडवांटेज भी हो सकता है. व्हाट इज दैट? दैट इज online joining of libraries. तो बच्चे किड्स लाइब्रेरीज को या डिजिटल लाइब्रेरीज को ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं. इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा that online joining of the libraries will lead to what? इनको हम अगर देखेंगे तो these will lead to the knowledge building, and this knowledge building will be the asset of advantage and the asset of the children. Number 4, हम कहते हैं कि this computer can act as a stress management tool. Stress management tool. How? We say that they can play multiple games and stuff like that, gaming activity, and this will
actually save them from the risk of time outside the house, the risk of the traffic as well, and the risk of the dust and pollution outside the home as well. So this can act as a stress management tool. हम जाते हैं disadvantage. मैंने कहा था हमेशा चार चार पॉइंट लिख लिया करें दोनों साइड्स के, ताकि आप चार पॉइंट्स के साथ जब दो दो एग्जाम एक मतलब आई मीन आउट ऑफ 4 कोई से दो पॉइंट्स के साथ आप एग्जांपल्स नोट कर लेंगे तो फायदा ये हो जाएगा कि आपके 4 पॉइंट्स और 2 एग्जांपल्स आपके पैराग्राफ नंबर 2 एंड 3 को 120 110 वेट तक ले जाएंगे, और इस तरह से हम 250 वर्ड्स का ऐसे लिखने हम 300 क्लास कर लेंगे बड़े आराम से. सो डिसएडवांटेजेस में the disadvantages include the disadvantages. Disadvantages include number one. पहला disadvantage can be number one time wastage. हम कहते हैं वक्त बहुत ज़ाया हो जाएगा. What is the reason of it? Time wastage इसलिए कि वो गेम्स वगैरह पे बैठेंगे और फिर बैठ ही रह गए. And time wastage इससे क्या होगा, इनका उनका स्कूल परफॉर्मेंस या उनका जो एकेडमिक रिजल्ट है, जिनका एजुकेशनल परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस विल सफर, है ना, विल डिक्लाइन. इसके अंदर डिक्लाइन आ जाएगा. नंबर टू हम ये भी कह सकते हैं that when we students sit for the longer hours, the students sit on the computer for the longer hours, हम ये कहते हैं they may suffer certain health issues. उन्हें कोई certain health issues भी हो सकते हैं. कैसे? हम कहते हैं उन्हें आई साइट प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज कंप्यूटर स्क्रीन रेडिएशन होती है, तो आई साइट का प्रॉब्लम हो सकता है. नंबर 3 हम ये कहते हैं कि for long hours sitting on the computers can even lead to addiction of the computer, and this addiction will actually kill their social skills. Human interaction skills खत्म हो जाएंगे, social skills. Okay, so time wastage. Number 2, health issues. Number 3, addiction can be another problem. And number 4, internet may give them an access to some bad material, और उनकी behavioral disposition जो है वो खराब हो सकती है. तो हमने चार पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया. नाउ वी आर गोइंग टू राइट द इंट्रोडक्शन. एंड इंट्रोडक्शन में आपको पता है सर ने कहा था कि टॉपिक और फोकस पे एक लाइन लिखनी है जिसमें कंप्यूटर यूज फॉर लॉन्ग आवर्स और बच्चे कवर हो जाए. जिनको लगता है कि उनसे पहला सेंटेंस टफ है बनाना, वो अपने क्वेश्चन के ही पहले सेंटेंस को थोड़ा रीवर्ड करके भी बना सकते हैं, बट दे शुड नॉट टारगेट मोर देन 5.5 और 6 बैंड. इफ यू वांट टू हैव गुड बैंड, आपको यही टॉपिक यही फोकस जहन में रखते हुए आपको एक अच्छा सेंटेंस खुद से बनाना है, जैसे सर ने बनवाया था कि जब भी दो वेरिएबल्स का कंपैरिजन होगा वी कैन यूज अ वर्ड, वी कैन यूज दिस स्टार्ट. अब जितना भी टेम्पलेट ऐसे का मैंने खुद लिखवाया, इंट्रोडक्शन का भी टेम्पलेट लिखवा रहा हूँ और बाकी सारा ऐसे का भी टेम्पलेट मैं खुद लिखवा रहा हूँ, और आज उसी टेम्पलेट को फॉलो करूंगा. याद रखिएगा, जब भी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होंगे, इसका मतलब है कि वी आर गोइंग टू वर्क ऑन टू थिंग्स, है ना. Where we are going to work on two things which are opposite to each other. What is that? It is a debate, है ना. तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं. In these days, there is a sparking debate. There is a sparking debate. खासी ज्यादा debate है. There is a sparking debate across the nations on computer usage in children for extended hours, because long hours का word वो use कर रहा था. We can make many other sentences as well. Computer use has become obligatory. हम ये भी कर सकते हैं पहला sentence. Computer use has become obligatory in all ages, including children across the globe. Okay, so we can make this sentence as well. But this sentence should reflect कि आपको topic और focus का समझ आया है, and that examiner should feel that you are not diverted from the core topic. Okay, so now हम अब second sentence लिखने जा रहे हैं. And sentence number 2, I told you people. Okay, so now move ahead. So
कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, बट दैट सेंटेंस शुड नॉट डाइवर्ट फ्रॉम द टॉपिक एंड द फोकस आते हैं। अब हम जब इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो सर ने सर बताया आपकी आवाज नहीं आ रही। भी नहीं आ रही, स्क्रीन भी शो नहीं। ओके। सो सर ने समझाया था कि जब भी हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, दैट इंट्रोडक्शन विल बी अकॉर्डिंग टू S5 अप्रोच, मींस 5 सेंटेंसेस अप्रोच। तो पहला सेंटेंस हो गया। सेंटेंस 2, अब आपको बताया था मैंने, दैट विल बी फ्रॉम साइड नंबर 1। जिनके पास लेक्चर नहीं है वो टाइप कर लें स्टेप्स इन एसे राइटिंग एंड हाउ टू राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ द एसे, तो फिर उसमें वो सारे स्टेप्स मैंने कवर किए हुए हैं। सो नाउ सेंटेंस नंबर 2 विल बी फ्रॉम साइड 1। मैंने लिखवाया था बहुत सौ में, है ना, तो मैंने प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन ऐसे लिखा, वहां पे भी यही था। बहुत सौ में जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है, वहां पे मैंने लिखवाया था बहुत सौ में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है ना। तो वही सेंटेंस यहाँ पर भी उस तरह का रिपीट होगा। बहुत सौ में, इन न्यूमरस, इन न्यूमरस बेनिफिट्स, बहुत से फायदों में, इन न्यूमरस बेनिफिट्स, दी वाइटल, सबसे बड़ा, द वाइटल एडवांटेज ऑफ यंग एज कंप्यूटर literacy is the technology expertise from childhood, and we are not writing the impact of it because impact कहाँ चला जाएगा, explanation में। यही point explanation में repeat होगा, तो फिर वहां पे आप उसका impact और example के साथ इसको और ज्यादा explain कर दें। in childhood, full stop। आगे चलिए। On the other hand, sentence number 3. Now this sentence will be from the other side, means the disadvantage. On the other hand, certain demerits include the time wastage due to entertainment activities. अब we are not going to exemplify the activities, वो explanation में चलेगा, ठीक है जी। अब आपकी ओपिनियन, सेंटेंस नंबर 4 is your opinion now. In my perspective, मेरे ख्याल में, in my perspective, या in my personal perspective, let me check my error, include, and it is the waste. Okay. In my perspective, yeah, even we can write in my personal perspective, मेरी जाती सोच के मुताबिक एडवांटेज ज्यादा है डिसएडवांटेज से। Advantages are more than disadvantages, full stop। अब अगर मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ, it is also good, but we can make it more better। कैसे? In my personal perspective, अब देखिएगा आपको कैसा लगता है, pros are more than the cons। ये नहीं, एक ये सेंटेंस हो गया, it is better than that one with we have written the previous one, and now we make it define more। कैसे कर सकते हैं? In my personal perspective, pros outweigh the cons, outweigh the cons। So the pros means benefits are more than the benefits are more than the problems। Okay, so advantages are more than the disadvantages। So in my personal perspective, pros outweigh the cons। Clear? Outweigh का मतलब होता है कि they overcome it, so they are more than that one। अब हम लिख रहे हैं पांचवा सेंटेंस, प्लान फॉर एसे। I will elaborate the both perspectives in upcoming paragraphs of this essay, full stop। I will elaborate the both perspectives in upcoming paragraphs of
this essay and we are done with the introduction paragraph. I told you up S5 को follow करेंगे तो how many words we can have? We can have about 80 words and we are on 70. The same 70 we have written in the first essay as well. अब हम जा रहे हैं paragraph 2 पे, which is the explanation paragraph number 1. essay का second, explanation का पहला. इसमें हम ब्लॉक फॉर्मेट के मुताबिक सिर्फ एडवांटेजेस को एक्सप्लेन. सर ने जो टेम्पलेट लिखवाया था, मैंने कहा था टू इनिशिएट विद एंड देन द नेम साइड 1, मैं सारा टेम्पलेट लिखवा चुका हूँ. टेम्पलेट फॉर द एक्सप्लेनेशन अगर किसी का रह गया है यूट्यूब से सर्च कर ले. टेम्पलेट ऑफ द एसे राइटिंग, टेम्पलेट फॉर द एसे राइटिंग एक्सप्लेनेशन बाय ज़ीशान. एक एक चीज मिल जाएगी उसमें. मैंने सारा टेम्पलेट खुद डिजाइन किया आप लोगों के लिए. टू इनिशिएट विद, to initiate with the advantages of early age use of computer machines, comma, it is important to understand that this will enhance information technology skills in youngs, full stop. अब इसका इम्पैक्ट लिख रहा हूं. in youngs, full stop. same will uplift their school performance, full stop. Their school performance, full stop. अब हमने एग्जाम्पल कोड करी. फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे, kids can take online lectures at their own in some days of unplayer weather, in some days of unplayer weather, or something like that, कि उस तरह की कोई और चीज. ओके, सो उनका क्लास ज़ाया नहीं होता, तो स्कूल परफॉर्मेंस विल गेट बेटर. अनप्लेजेंट होगा ना, अनप्लेजेंट है, फुल स्टॉप. तो हमने पहला पॉइंट विद एग्जांपल कवर कर दिया. सेकंड पॉइंट है ईज ऑफ हैंडलिंग डेटा. ओके, इट इज आल्सो noticeable that, computers grant an ease of data management to preschoolers, बच्चों को, preschoolers, which gives them an relaxation, which gives them a relaxation from heavy bags on the back. Bags on the back. Is it clear? अब इस ease की एग्जाम्पलिफिकेशन होती है. For example, placing books and copies in files and folders, full stop. यहाँ हम देख सकते हैं placing soft
बुक्स एंड कॉपीज इन फाइल्स एंड फोल्डर्स, फुल स्टॉप। तो आपने एक एग्जाम्पलिफिकेशन भी कर। हम तीसरा पॉइंट लेके आ रहे हैं, ऑनलाइन ज्वाइनिंग ऑफ लाइब्रेरीज। आगे चलें, एडिंग टू इट, comma, children can access online libraries from the internet, and this will be very significant, अच्छा होगा, for their overall knowledge lift, full stop। आखिरी point, finally, comma, stress management tool, finally, computers can act as a model for stress management in kids, such as playing games, or any other program with internet support, full stop। हमने 4 पॉइंट्स पे लिखा, और हमने 4 पॉइंट्स में से चारों के इंपैक्ट लिखे और 2 एग्जांपल्स कोट करें। ठीक है जी। हमने सच एज के साथ भी एक एग्जांपल आखिरी में भी कोट की, लेकिन ये जरूरी नहीं थी। मैंने बताया था कि जब आप चलेंगे 4 पॉइंट्स 4 इंपैक्ट और 2 एग्जांपल्स के साथ, अबाउट 120 का बनेगा आपका पहला पैराग्राफ, यानी कि एक्सप्लेनेशन का पैरा, ये ऐसे का दूसरा। अब यहाँ पे बना है 130 वर्ड, बिकॉज मैंने आखिरी पॉइंट के साथ भी एक एग्जाम्पल कोट करी है जो कंपल्सरी नहीं थे, तो मैं ना भी करता तो ठीक था। ठीक है जी। अब हम जा रहे हैं on the other side, comma, some common disadvantages include the time wastage as primary one। बिल्कुल वही टेम्पलेट फॉलो कर रहा हूं जो मैंने प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस में किया। ठीक है जी। अब इसकी एग्जाम्पलिफिकेशन करते हैं। लाइक if children will play non-stop games as PUBG, this will be a disaster for class results, full stop। Example भी हो गया। Okay, so number 2, second point, and what was that? The health issue। Furthermore, some health issues cannot be put on a side, नहीं रखे जा सकते। The computer screen radiations can बुरे तरीके से adversely harm the eyesight of these very young generation। और this होगा ना, जनरेशन है ना, this very young generation, full stop। चलिए, हमने 2 पॉइंट लिखे। नाउ आई गिव द थर्ड पॉइंट। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? एडिक्शन। Moreover, comma, computer addiction is also evident, नजर आती है
is also evident in many children across the globe. पूरी दुनिया में. फुल स्टॉप. जरूरी नहीं है लीडिंग टू करके ही आपने इनफैक्ट लिखना है, अलग लाइन में लिखे. same becomes the reason behind poor social and interpersonal skills. Full stop. Is it done, बच्चों? हम 4th पॉइंट को आ लास्टली सबसे आखिर पे internet support can provide an access to some unwanted data on the web. This access can really be disastrous. हम disaster पर लिख चुके हैं. Be significant for bad behavior in a few kids. फुल स्टॉप. तो हमने 4 पॉइंट्स मुकम्मल किए. मैंने कहा था जब 4 पॉइंट्स 2 एग्जांपल्स के साथ लिखेंगे, सेकंड पैराग्राफ विल टर्न ऑन 110. इट इज ऑन 15. क्लियर? वी आर गोइंग फॉर द कंक्लूजन एंड कंक्लूजन में सर ने आपको 5 सेंटेंसेस लिखवाए. पहला सेंटेंस हमेशा सर ने क्या लिखवाया? कंक्लूडिंग द टॉपिक. दूसरा लिखवाया था इन माय पॉइंट ऑफ व्यू. अब सबसे बड़ा एडवांटेज, बस सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ साइड 1, comma, the major advantage of early age use of computers is the technology gripped from base age leading to better professional life ahead. Clear? Better to professional life ahead. Full stop. अब आपने लिखना है however. हर ऐसे के कंक्लूजन में मैंने यही लिखा, तो ये हो गया नंबर 4. अब नंबर 5 लिखते हैं. साइड 2 का एक पॉइंट. However, the time wastage must be addressed very effectively by parental support. टाइम वेस्टेज को हमें एड्रेस करना चाहिए इफेक्टिवली पेरेंटल सपोर्ट के जरिए. एंड आई सेड कि 35 वर्ड्स के करीब हमारा कंक्लूजन बनेगा. इस पैटर्न पे वी आर 42 इन मार्केट 40. अगर मैं टोटल टोल देखता हूँ एसए को, तो ये हो गया 40 in 105 in 130 plus 70, and this is an essay of about 230, 2075, and it is about, say for example, 345 words essay, 145, and then it is 245, 275, 275, and then it will make how much? This will make 345 words essay in front of you. So what I did, मैंने आपको समझाया है, मैंने आपको बताया है, मैंने पॉइंट्स भी निकाले हैं, मैंने करेक्शंस भी की हैं, पर अब रिव्यू के लिए भी मेरे पास अभी 5 मिनट बाकी हैं. ये सारा काम मैंने 40 मिनट्स में किया. मैंने समझाया भी है, पॉइंट्स भी लिख के दिखाए हैं, एस्से भी लिखा है, और अभी भी मेरे पास 40 मिनट्स में 5 मिनट्स बाकी हैं जो मैंने आपको कहा है कि रिव्यू के लिए काम आएंगे. इट इज व्हाट द राइट वे ऑफ राइटिंग अ IELTS एस्से. 4 पॉइंट्स निकालने साइड 1 के एडवांटेज हो, तो 4 पॉइंट निकालने साइड 2 के डिसएडवांटेज. और सर ने जो टेम्पलेट कराया उसको फॉलो करें. सेम टेम्पलेट को फॉलो करने का फायदा ये होगा कि आपको एग्जाम में, अगर रात को सॉफ्टवेयर में आप सर के सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस भी कर लेंगे, व्हाट विल हैपन नाउ, एग्जाम में जब आपके पास ये ऐसे आएगा, तो बिलीव मी, व्हेन यू आर ऑन अ टेम्पलेट, तो टेम्पलेट की कीज पर फिंगर ऑटोमेटिकली आ जाएगी. हाफ ऑफ द वर्ड्स आर फ्रॉम द टेम्पलेट.
ना तो आपको यूनिक वोकैबुलरी वर्ड्स का प्रॉब्लम होगा, ना आपको टाइपिंग का प्रॉब्लम होगा, बिकॉज ऑटोमेटिकली हैंड्स उन फेमिलियर वर्ड्स के ऊपर चलने के आदी होंगे. फॉर एग्जांपल न्यूमरस, सिग्निफिकेंट, certain, some, है ना. फॉर इंस्टेंस, फॉर एन एग्जांपल, to initiate with, on the other hand, adding to it, moreover, furthermore, it is noticeable, it is important to understand that, है ना. ये finally, lastly, in concluding the topic, in my point of view, है ना, these all words would be in your practice if on the software as well. In exam, this practice will save your half time and you will be very effective and very, very efficient to write essay in about 35 to 40 minutes with a good review of 5 minutes. कोई सवाल है तो मुझसे पूछिए. I'm here to answer and we're happy to answer as well.